Hello everyone. In previous class, we discussed about what is Darlington transistor pair, its construction, its working, and we also discussed about Zickley transistor pair circuit. And the application of Darlington transistor pair circuit. प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा था डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर क्या होता है और कैसे ऑपरेट होता है, और ज़िक्लाई डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमने प्रीवियस वाली क्लास में स्टडी किया था। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर समराइज हमने किया था और हमने एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी देखे थे डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर सर्किट के। तो ये हमने प्रीवियस वाली क्लास में ये सारे टॉपिक कंप्लीट किए थे। So in this lecture we will study about what is the cascading and cascade amplifier. इसमें हम पढ़ेंगे cascade amplifier क्या होता है और why we need to cascading the amplifier circuit. After this, we will study about some application of cascading amplifier in different areas or different field. Next, we will move on the next topic. Name is bootstrapping techniques. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये bootstrapping techniques जो होती है वो क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं. And finally, the references of this presentation. So in this lecture, we cover all this topic one by one. So let's start with topic 1. Name is Darlington transistor pair. ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाली क्लास में स्टडी किया है, फिर भी हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. So the Darlington transistor is a special arrangement of two standard NPN or PNP bipolar junction transistor connected together. दो NPN या दो PNP bipolar junction transistor को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि the emitter of the one transistor is connected to the base of the other to produce a more sensitive transistor with a much larger current gain, being useful in application where the current amplification or switching is required. तो ऐसा अरेंजमेंट करने से हमें क्या मिलता है, हमें जो करंट गेन मिलता है वो ज्यादा मिलता है. तो यही हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था. We also discussed about Zickley transistor pair. तो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर में जो ड्रॉबैक्स था वो Zickley ट्रांजिस्टर पेयर ने उसको इम्प्रूव कर दिया था. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया है इसका ऑलरेडी. So this is the circuit diagram for Zickley transistor pair. Number next is Darlington transistor summary. इसके बाद हमने समराइज किया था. इसके बाद हमने डार्लिंगटन पेयर के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था. Now let's start the topic Cascade Amplifier. तो आज हम ये पढ़ते हैं Cascade Amplifier क्या होता है. A system which has a single transistor amplifier does not gives adequate bandwidth, otherwise the gain, and also they will not include the accurate impedance matching for the input, otherwise output. To overcome this problem, here is a solution like by combining several amplification stages.
When the product of gain bandwidth is stable, then we have to exchange bandwidth intended for high gain within a single stage amplifier. The cascade amplifier theory is used for high gain as well as the high bandwidth. तो जहां भी हमें हाई गेन चाहिए या हाई बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट होता है उस जगह हम एम्पलीफायर को कैस्केडिंग अरेंजमेंट में लगाते हैं. So this amplifier, or we can say that cascade amplifier, is the best solution for high gain as well as the high bandwidth. So the question is that what is cascade amplifier? A cascade amplifier is a two-port network. जो आपने ऑलरेडी नेटवर्क जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें स्टडी किया होगा. टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? टू पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास एक इनपुट पोर्ट होता है और दूसरा आउटपुट पोर्ट होता है. So a cascade amplifier is a two-port network designed with amplifiers which are connected in series when every amplifier transmits its output to the second amplifier input in a daisy chain. मतलब कैस्केडिंग का मतलब एक चेन टाइप का बना देते हैं हम. चेन कैसे बनाते हैं कि मान लो मेरे पास एक एम्पलीफायर है तो उस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो अगले वाले एम्पलीफायर में एज अ इनपुट की तरह दे देते हैं. So this arrangement is known as the cascade amplifier. The problem in measuring the gain of the cascaded stage is the non-perfect coupling among two stages because of loading. The two stages of cascaded common emitter are shown in the following circuits. So this is the circuit diagram for common emitter arrangement. So this is called the first stage and this one is called the second stage. This is called the two-port network. मैं आपको दिखाता हूँ laser point के through. This is called the one port or known as input port and this one is called the output port. So this network is known as two-port network. This is the first amplifier and this is the second amplifier. So first amplifier का जो output है वो second amplifier का input की तरह काम करता है. तो इस टाइप के arrangement को हम बोल देते हैं cascading arrangement. इसमें हमने टू स्टेज को कैस्केडिंग किया हुआ है. दिस इज द स्टेज 1 एंड दिस इज द स्टेज 2. दिस इज द सोर्स साइड एंड दिस इज द लोड साइड. तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैस्केड अरेंजमेंट. हियर द वोल्टेज डिवाइडर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द इनपुट एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेक्स्ट स्टेज. द कंप्लीट गेन कैन नॉट बी रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टेज. The amplifiers is used to enhance the strength of the signal in a TV receiver. In this amplifier, the primary stage of the amplifier can be connected to the secondary stage of the amplifier. To build a practical electronic system, a single stage amplifier is not enough. तो अगर हम प्रैक्टिकल कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता. इसलिए हमें कैस्केड ऑपरेशन करना पड़ता है. कैस्केड ऑपरेशन करने से गेन हमें हाई मिलता है एज वेल एज दी बैंडविड्थ भी हमें जो है वो हाई मिलती है. इवन though the amplifier's gain mainly depend on parameter of the device as well as component of the circuit, there exists a higher limit of gain which can be attained from a single stage amplifier. Therefore, the gain of this amplifier cannot be sufficient in practical application. To conquer this trouble, we require these amplifiers two or more stages to amplify the overall amplifier voltage gain. As above, one stage is used within series. It's named as multi-stage amplifier. मतलब ऐसे एम्पलीफायर जिसमें हमारा एक से ज्यादा स्टेज हम यूज करते हैं उसको हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं. The main drawback of the cascade amplifier is when several stage increases, then the bandwidth will decrease. अगर हम इसमें ज्यादा स्टेजेस जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो उससे हमारा जो बैंडविड्थ है वो डिक्रीज हो जाता है. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ कैस्केडिंग सिस्टम.
Now the next is the Cascade Amplifier circuit. So this is the circuit diagram for Cascade Amplifier. The circuit diagram of Cascade Amplifier is shown on a figure. The circuit can be designed with two configurations of the transistor, namely common emitter and common base. The common base configuration provide a good high frequency operation. तो ये जो अभी आप अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉमन बेस, क्योंकि इसमें जो बेस है वो कॉमन किया हुआ है. The current gain as well as the input resistance of the cascade arrangement is equivalent to the related value of common emitter single stage amplifier. The output resistance can be equivalent to the common base configuration. The Miller's capacitor shunting the common emitter input stage is extremely small. The next topic is Cascade Amplifier applications. The application of Cascade Amplifier include the following. Number 1. This amplifier is used as tuned RF amplifiers with television circuits. तो ट्यून RF एम्पलीफायर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, उनको ट्यून करने में इस एम्पलीफायर का यूज होता है जो कि टेलीविजन सर्किट में यूज होता है. दिस एम्पलीफायर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वाइड बैंड एम्पलीफायर. Number 3. The isolation offered among input and output with these amplifier is extremely high. So these are some application of Cascade Amplifier. Thus, this is all about the Cascade Amplifier analysis. The configurations of this amplifier mainly include some advantages like less input resistance, moderate to high current gain, voltage as well as the high output resistance. The main drawback of Cascade Amplifier is when several stages increase, then the bandwidth will decrease. In an amplifier chain, when the individual amplifiers are cascaded, means the output of the first amplifier device is connected to the input of the next and so on. Cascading is a general term for objects connected serially that start a chain reaction. This is the circuit diagram for common base and this is the circuit diagram for common emitter configuration, and this is the diagram for cascade. So what is cascade and difference between cascade and cascade? Next slide में हम देखेंगे. A cascade, on the other hand, is an amplifying device that has a common emitter input stage driving a common base output stage. So this is the circuit diagram for cascade, and this one is called the common emitter, this diagram, and this one is called the common base arrangement. So the cascade amplifier is a combination of common emitter and common base mode transistor. Since the common base amplifier has the advantage of wider bandwidth, but due to low input impedance, it has some limitation. And on the other hand, the common emitter amplifier has high input impedance. So by combining the common emitter stage and common base stage,
These combinations can be used in wider application since called as Cascade Amplifier. While the Cascade Amplifier is a combination of two or more transistor any of the configuration. तो कैस्केड और कैस्कोड में क्या फर्क है? कैस्कोड में हम दो या दो से ज्यादा ट्रांजिस्टर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लगा सकते हैं, उसको हम कैस्केड बोलते हैं। और कैस्कोड एम्पलीफायर में हम जो यूज करते हैं वो कॉमन एमिटर और कॉमन बेस मोड का यूज करते हैं, टू ट्रांजिस्टर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैस्केड एंड कैस्कोड। The next topic is the bootstrapping techniques. So what is bootstrapping? Typically, bootstrapping is techniques where some part of the output is used at the startup. In bootstrap amplifiers, bootstrapping is used to increase the input impedance, due to which the loading effect of the input source also decreases. The design looks similar to the Darlington pair, having a bootstrap capacitor. Bootstrap capacitor used to provide AC signals positive feedback to the base of the transistor. This positive feedback helps in improving the effective value of the base resistance. The increment in the base resistance also determined by the voltage gain of the amplifier circuit. तो bootstrapping क्या है? bootstrapping एक टेक्निक्स है जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में टू इंक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस को इंक्रीज करने के लिए हम bootstrapping टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो लोडिंग इफेक्ट है इनपुट सोर्स का उसको कम करना होता है, इसलिए हम यूज करते हैं bootstrapping technique ka to increase the input impedance. So bootstrapping is a technique used in the design of transistor amplifier circuits to increase the input impedance and thereby reduce the loading effect on the input source. तो ये हमारा बिल्कुल मेन जो फंक्शन है और मेन जो वर्क है bootstrapping का वो ये है कि bootstrapping जो है वो किस लिए यूज करते हैं? टू इंक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस को यूज करने के लिए अब क्वेश्चन आता है इनपुट इम्पीडेंस को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लोडिंग इफेक्ट को सोर्स साइड कम रखना होता है। So next question, why do we need high input impedance for amplifier transistor? एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर सर्किट में हमें इनपुट में हाई इंपेडेंस की जरूरत क्यों होती है? सो हाई इनपुट इंपेडेंस इंप्रूव द एम्पलीफिकेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड thus required in various amplifier applications. If we have low input impedance, we will get low amplification. Generally, the BJT means bipolar junction transistor have low input impedance, typically 1 ohm to 50 kilo ohm. So for this, bootstrapping techniques is used to increase the input impedance. ठीक है, अगर हमारा इनपुट इम्पीडेंस एम्पलीफायर सर्किट का ज्यादा होगा तो एम्पलीफिकेशन जो है वो हमें ज्यादा मिलेगा, और अगर कम होगा तो हमारा जो सिग्नल है वो कम एम्पलीफाई हो पाएगा। इसीलिए हमें इनपुट में हाई इम्पीडेंस की जरूरत होती है, जो कि हम बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक से कर सकते हैं। The voltage across the input impedance is calculated by using the formula V is equal to in bracket Vn into Zn। Vn जो है इनपुट वोल्टेज है और Zn जो है वो इनपुट इम्पीडेंस है, डिवाइडेड बाय Vn प्लस Z into Vn। Hence, according to the formula, the input impedance is proportional to the voltage across it. If the input impedance is increased, the voltage across it will also increase and vice versa.
A bipolar junction transistor BJT has an inherently low input impedance. अभी हमने स्टडी किया कि BJT का नॉर्मल जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है, जिसकी वैल्यू 1 ओम से 50 किलो ओम के बीच तक होती है, एंड दिस रिड्यूस फर्दर आफ्टर द एडिंग ऑफ बाइसिंग ट्रांजिस्टर सच एज अ पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क कनेक्टेड टू द बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर. While it improves DC stability, these resistors have the effect of shunting the input, thereby reducing the input resistance. These type of circuit usually pose a problem where the high input impedance is required, and therefore bootstrapping is a technique that help increase the input impedance. A high impedance input is very useful, for example, in a radio circuits where the base junction of the transistor connect to a ferrite coil to amplify the radio signal. Usually, the amplifier stage is required to minimize the loading on the coil for better amplification. It is also useful in instrumentations where you need to take accurate measurement using probes such as bioprobes. A common emitter follower circuit such as the one shown above will achieve a 100-fold increase in the effective value of Rb when the voltage gain is 0.99. For a further increase in impedance, usually a two-stage direct coupled circuit is utilized. Next is the working of Bootstrap amplifier. So this is the circuit diagram for Bootstrap amplifier. For the input pulse signal, we have used an AC signal using transformer. You can also use PWM input, means pulse width modulation inputs, and for the VCC input, we are using the RPS, means regulated positive supply in the circuit. Maintain the distance between the AC and DC wire for safety reason. This is the circuit diagram for bootstrapping amplifier. After connecting the circuit as per the circuit diagram, the circuit looks similar to the Darlington pair. Here we have used bootstrapping techniques to increase the input impedance of this amplifier circuit when the base of the transistor Q1 is high and the point B is low. Therefore, the capacitor charge up to the value of voltage across R2 when Q1 goes low and the voltage start increasing at the base of Q2. The capacitor discharges slowly, and to maintain the charge, point A is also pushed up. So the voltage at the point B increases and the voltage at point A also keeps rising until it goes more than the VCC. The charge into the bootstrap capacitor C1 is drained by the resistor R1 and R2. The technique is called as bootstrapping because rising the voltage at one end of the capacitor will increase the voltage at the other end of the capacitor. Note: bootstrapping techniques can only be used if RC time constant is more in comparison to the single period of the drive signal. Below is the Proteus simulations of the bootstrap amplifier with the amplified waveform. So this is the simulated circuit diagram for bootstrapping techniques, and this is the output waveform for
bootstrapping amplifier circuit. Now the next is the references. So these are the references of this presentation. And thank you for watching this video.